Okay, let's get started. So before we start, even with the JVM, you should know what is JDK, what is JRE. Then we will talk about the. So anyone knows what JDK stands for? JDK stands for Java Development Kit. Okay, it stands for Java Development. और ये क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व्हाट इज दिस इज अ सॉफ्टवेयर राइट सॉफ्टवेयर एंड हु हैज प्रोवाइडेड दिस जावा और सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल बोल सकते is provided by Oracle. Since Sun Microsystem is acquired by Oracle, so you can say it is provided by. Okay. Now this is a software. Why do we need this software? What is the use of this software? जेडीके हमने सेटअप किया था राइट जेडीके हमने डाउनलोड किया था ये कहाँ पर मिलता है सॉफ्टवेयर oracle.com पे मिलता है आपको the software you will get it at oracle.com. So what is the use of this software? oracle.com पे मिलता है आपको इस हमने डाउनलोड किया था उसे इंस्टॉल भी किया. So why do we need this software? जेडीके इज अ काइंड ऑफ अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जैसे ऑफिस सूट होता है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस का सूट में आपको एक्सेल पीपीटी वर्ड ये सब कुछ मिलता है वैसे जेडीके इज अ काइंड ऑफ अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो इसमें कौन से सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल्ड होते हैं साथ वी हैव जावा कंपाइलर जावा debugger we have java profiler we have then we have jre also Java runtime engine also, and we have a lot other things, JVM also, our JVM also, and there are n number of other softwares. So this is kind of a suite of software. This is a suite of software. Now, so we talked about this is a suite of software, and we will talk about the use of this software. So using this software. Now, who is using this software? Who is using this software? Developer. Okay. Which developers are they using? So Java developers are using this. Who are using Java developers? So Java developers, for what purpose they do? So they are going to write program. They are going to write Java programs. What is the job of Java developer? Write Java programs. Then compile. Compile करने के बाद प्रोग्राम को रन करना. ये सारी प्रोसेस अब और भी बहुत सारे डीबग करना प्रोफाइल करना बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑपरेशंस नॉट ओनली these are something you have done as a beginner you write program you compile and run you debug also and there are some other things also Java developer do जैसे profiler होता है बहुत सारी होती है. So these are the some things developer is going to perform. So to perform these things now to compile a Java program, so you write the Java program in a .txt file. You will write in a app.txt file, sorry app.java file. अभी इस फाइल को आप कंपाइल करोगे. कंपाइल करने के लिए मतलब कंपाइल व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलेशन व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलेशन कंपाइलेशन मतलब आपकी जो आपने कोड लिखा है के अंदर क्या कोड है कोड में जो एरर्स है मिस्टेक फाइंड करना. इफ देर आर एनी मिस्टेक्स इट विल लिस्ट डाउन कि दीज आर द मिस्टेक्स आर देयर इन योर प्रोग्राम. और कंपाइलेशन सक्सेसफुल होता है तो यू विल जनरेट सम ऑफ आउटपुट. कंपाइलेशन is done with the help of abhi jo process finding the errors finding the issues or generating the some output. So this is done with the help of a software called as Java compiler. What is the software name? Java compiler. The software name is Java compiler. So this is the software which comes built or which comes with your standard JD. Then to execute और रन द प्रोग्राम अभी जो जावा कंपाइलर ने आउटपुट जनरेट किया होगा दैट विल बी व्हाट विल द आउटपुट ऑफ जावा कंपाइलर
You will have the bytecode. Bytecode, that bytecode is stored in the dot class files. अभी इन डॉट क्लास फाइल्स को क्या करना है, हमें रन करना है। रन करना है मतलब क्या करना है, अभी ये तो इंग्लिश लाइक कंटेंट है इसके अंदर, तो दिस कंटेंट्स इंग्लिश लाइक। तो रन करना मतलब जो आपका कोड होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना, फिर वो बाइनरीज को एग्जीक्यूट। दिस प्रोसेस इज टेकन केयर बाय सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज JRE। ये JRE कहाँ पर प्रेजेंट है? JRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम इंजिन, या आप इन्वायरमेंट भी बोल सकते हो इसे, जावा रन टाइम इंजिन या जावा रन टाइम इंजिन या जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। नाउ we have seen two things. We have seen this first thing is Java compiler, then we have JRE. Now JRE के अंदर एक और सॉफ्टवेयर होता है. This is kind of a JRE which will contain again sub software. So that is nothing but JVM. So JVM is the actual one who is performing this execution of program. So JVM is the program which is part of JRE. So at the bigger scale we have this JDK, and inside the JDK we have Java compiler, there's some tools और भी बहुत सारी चीज़ें. Then inside the JDK we have a software called as JRE, but this is JRE. और JRE के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, तो JDK consists of JRE, JRE consists of JVM. JDK consists of JRE, JRE consists of JVM. ये तो हाई लेवल हो गया. JDK में बहुत सारी चीज़ें हैं. You open the execution folder, you will see that there are a lot many things. Not only these, but there are n number of other things. बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्रेमवर्क्स. Now, who is going to use JDK? Who is going to use JDK? Java developer. Who is going to use JDK? JDK will be used by whom? Java developer. So Java developer is the guy who is going to write code. So what is the job of this developer? So he is going to write program, compile, and what is the job of the Java compiler? Write, compile, run. और भी बहुत सारी चीज़ें, डिबग करना या प्रोफाइल चेक करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशन. So what these are the some few operations. Now to perform all of these operations, so he can download one software called as JDK. So JDK will have lot of group of softwares which will help you to write, compile, run, and there are some other operations, lot of other things. Yeah. So as a developer you need JDK. As a developer you need JDK. But as an end customer, there is the customer. So what is the job of customer or end customer? So as a now if you think of, we use lot of softwares. We use lot of softwares. What softwares we use? नोटपैड या एक्सेल, कैलकुलेटर. तो हम क्या करते हैं यूजुअली, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो हम डाउनलोड करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं. तो डू वी कंपाइल एनीथिंग? डू वी कंपाइल एनीथिंग? कंपाइलेशन वगैरह ऐसा कुछ प्रोसेस करते हैं क्या हम? नो. व्हाट वी डू, वी डायरेक्टली execute or run the program. So as an end customer, so what is the job? We will simply execute or run the program. तो execute और run करने के लिए आपको क्या चाहिए? बस need JRE. You do not need entire JDK, you need only JRE. You need JRE. Now as a developer you will need JDK, and as an end customer you will need JRE, and you can download these two separately also. अगर JRE separately download करते, you will have only components which are ready to, like which are required to run the software.
और जेडीके अगर आपके पास है तो आप बहुत सारी चीज़ें राइट कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, प्रोफाइलर कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी टूल जो आप डेवलपर करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंड कस्टमर को डायरेक्टली क्या करना है, रन करना है, विल यूज एआई, राइट। तो जेडीके कंसिस्ट ऑफ जेडीके कंसिस्ट ऑफ this is the one outer box we have. This is your jdk, and inside the jdk we have another box, that is jre. Inside the jre we have another component. Yes, so we are going to look this part, we are going to work on this, तो हम इसे समझने वाले हैं। तो the topic was DVM architecture. We are going to we'll understand what this component is, how it is structured, how it is useful for your Java program execution. We will focus on this. Okay. Now, before we talk about that, can someone just tell me how Java works? काम करते हैं। हमने देखा है हाउ जावा वर्क्स। पहले क्या करते हो आप? आपको पता है, फिर डर क्यों रहे हो आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, यू राइट द प्रोग्राम, write the program. What you do with this, you save the file with, let's say, app.java. Name will be app dot. उसके बाद you give this file to whom? You give this file to a compiler. We have a software called as Java compiler. So who provide this software? So this will be downloaded along with the JDK. So Java compiler does simple job. What simple job it does? If there are any errors, to list down that errors. If there are no errors, simply generate a output. What output it is going to generate? It will generate a file called as, it's going to generate a file. What this file is? App.class .class. Now this file contains bytecode, or this is also called as magic code, or this is an intermediate code. What this is? Intermediate code. Then intermediate code मतलब ऐसे English kind of. And remember, this file does not contain binary code. File does not contain binary code. ये plain English है. Intermediate some convert. Now, after this file, this is done on one machine. Done on one machine. This machine can be a Windows machine or can have. Now, there might be a situation that you want to run this program on the same machine or on the different machine. I will assume that we are not going to run the same machine पर भी कर सकते हो आप, that is not an issue. But let's assume that I want to run this program on some other machine. We have different machines. We'll have different machines, target machine. So this is a Windows machine. Now
Linux machine. How? Mac machine. Now this machine can be anything. You don't need to worry about. This might be a Windows machine or this might be any other machine. Can be Windows, Mac or Linux machine. Don't need to worry. Now I want to take this file and give it to this particular. What I want to do, take this file and run this particular file on this particular machine. But you can you directly do this? Can you directly do this? No, cannot directly do. तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको? तो इस फाइल में तो zeros and ones नहीं है. This file does not contain zeros and ones. This file does not contain zeros and ones. तो इस फाइल में आपको zeros and ones नहीं है, which you can directly run on the machine. तो आपको क्या चाहिए? तो विंडोज मतलब कोई भी मशीन हो तो आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए होता है zeros and ones. मशीन को वही समझ में है, zeros and ones. So you need some zeros and ones. You need some zeros and ones. You need some zeros and ones which are going to be understood by this person. We need some 1010 or some other. This machine also needs some set of ones and zeros. Right? There also you need some ones and zeros. But all the machines will need different set of zeros and ones. All the machines will need different zeros and ones. Now who is going to generate these zeros and ones? Whether this will be automatically generated? No. Then, sorry. No. Now you want to just run. You want to just run. अभी आपने compile कर दिया. So JDK was installed on that machine. JDK was installed on this machine. JDK was installed on this machine. ये मशीन पर JDK इंस्टॉल्ड था, इसलिए आपको कंपाइलर मिला. कंपाइलर यूज करके आपने फाइल को कंपाइल किया. नाउ दैट डॉट क्लास फाइल इज जनरेटेड. नाउ यू आर ऑन टू दिस पर्टिकुलर विंडोज मशीन. लेट्स थिंक ऑफ दिस विंडोज मशीन. नाउ on this Windows machine, I want to run this file. What was that? A dot class file. So what I will do, I will read that file. I will take that file and I will give that file to one software. What is that software? JRE. What is that software? JRE. So JRE is the software which will take that file as a input. What it will do? It will take that file as a, and this JRE will generate zeros and ones. Similarly, on this machine also, you will have a software called as JRE, and it is going to generate zeros and ones. Here also you need JRE. This software is going to also generate these zeros and. So this is how you actually. अभी JRE के अंदर JPM होता है. JPM में क्या होता है? We will talk about that. This is a high level picture. You should know that. अभी इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? Can you see there? You can run the program. You write the code only once, and you can run the program on any machine. You can run the program any given machine. आप प्रोग्राम कितने बार लिखते हो? You are writing program only once, but you are able to run that program on any machine, provided that you have JRE installed. अगर आपके पास JRE है उस मशीन पर, तभी आप जावा प्रोग्राम रन कर सकते. Will be able to run the Java only when you have this JRE installed that. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो. Now it is called as platform independence. Platform independence. Java is platform independent. Is platform independent. But your JRE, other hand, this particular JRE, this JRE is platform by
because we need different JRE for different machine, different JRE for different machine. So we cannot have the JRE software same for all of the Windows or Linux. We'll have different JRE for different machine. So JRE which is installed on Windows machine will generate the zeros and ones which are only understood by Windows machine. So this particular JRE is responsible, which is installed on Windows to generate the zeros and ones which are understood only by Windows machine. Now the JRE which is installed on this Linux machine is responsible to generate the zeros and ones which are only understood by. Now the JRE this installed on Mac machine is responsible to generate zeros and ones which are only understood by this. Right? ये वाला क्लियर है सारा? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जावा को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? व्हाई जावा इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. प्लेटफॉर्म इज नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब if you compiled one Java program on a machine, that compiled code can be run on any machine. कोड आप एक बार लिखोगे, कंपाइल करोगे, दैट्स इट. उसके बाद जो भी कंपाइल्ड कोड मिलता है that you can run on any machine. This is called as portability or platform independency. So compiled code of Java is not dependent on any other particular operating system. It can run on any operating system provided there is a JRE. It can run on any machine where it has JRE. Because आपका Java का प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली रन नहीं होता. इट रन्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन. JVM इज द वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन, तो के अंदर आपका प्रोग्राम चलता है, नॉट डायरेक्टली इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट? तो आप ऐसे समझ सकते हो, यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, operating system, and inside that there is one virtual thing that is called as JVM. What is that? This is, you can think of as JVM, and inside this your Java programs will be written, or Java application. This is your operating system, and your C++ programs will run directly inside the operating system environment. This is the OS environment. This is OS environment. This is Java environment. This is a secured Java environment. के अंदर जावा का प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डायरेक्ट ओपन एनवायरनमेंट होगा वहां पर आपका सी. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाउ हाउ जावा वर्क्स, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ JRE इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, व्हाट इज JDK, व्हाट इज JRE, इज JV. ये क्लियर है ये प्रोसेस? देखो इसे एक बार केयरफुली, बिकॉज इसके आगे हमें देख. Clear on this part? Clear? We can move ahead. Okay. Now we are just going to look into this JVM. So JVM stands for Java Virtual Machine, or Java Virtual. Now this is a software. First of all, remember this is a software, and it is part of
and JR is part of JR is part of so JDK consists of JRE, JRE consists of where up to your DK, JRE, and that we have the JRE. J means the center. So this is the program responsible to run Java program. What is the job of this particular program? To run the Java program. Talk about this. So it does everything, memory management, everything जो भी आपका होता है Java program को run करने के लिए. तो memory allocate करना, instruct execute, ये सारा काम कहाँ पर होता है? JVM के अंदर. So JVM is the responsible. You can think of it as heart of your thing. Java का heart बोल सकते हो. JVM is the heart. Now let's talk about that. Now once again I will ask you, you write the Java program and you save that file. How do we save the file? We save the file using app dot. Then what happens? You have a Java compiler. What Java compiler does? Compiles the code. If there are any errors, it will give, otherwise it will generate the dot class or app dot class by bytecode बोल. Now this is first part. This is the first part we. उसके बाद अभी क्या होता है? That is what we are going to look into a much deeper part now. तो इसके बाद actually होता क्या है? That is we are into. So after this, now we are into execution in. We are into execution. कहाँ पर है आप? Execution environment. That is, this is something. Or you can think of this is part of JVM को भी बोल सकते हो आप. We are now inside the. यहाँ से आपका process. Now you will take this file. Now who is going to take that? Obviously JRE मतलब JVM की बात हो रही. Now there will be a program called as class loader. What is the program name? Class loader. What is the program name? Class loader. The job of this class loader is to load the class in the memory. मतलब जो अभी ये memory की बात हो रही है. This is into the execution. मतलब एक class loader program बोल सकते हो. What is the job of that? Take this file and load into the memory. Then उसके बाद, so we have something called as bytecode verifier. What is the next thing? Bytecode verifier is the next thing. We have bytecode verifier. So this is the program which is going to what is the job of this bytecode verifier? So this bytecode verifier is also a software or a program. The job of this program is to verify the byte. Now once it is verified, it will, what is the next thing? Now it will, once this particular bytecode is verified, then we have actual execution memory. क्या होता है यहाँ पर? Execution memory, program execution memory. आपका जो जावा प्रोग्राम होता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो मेमोरी चाहिए, दिस इज काइंड ऑफ अ मेमोरी. ये क्या है? आपका सॉफ्टवेयर और अ प्रोग्राम. आप क्लास लोडर प्रोग्राम है, ये क्या है? प्रोग्राम. दिस इज आल्सो प्रोग्राम. दिस इज काइंड ऑफ अ मिनी सॉफ्टवेयर बोल सकते हो. और जो हाईलाइटेड पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, नाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट, what this particular part we are talking about, this is nothing but your execution memory. Your execution the
मेमोरी। कौन सा मेमोरी? एग्जीक्यूशन मेमोरी। Now this memory is divided into multiple compartments. Memory is divided into multiple compartments. So what are the multiple compartments we have? The first part is, call it as, so this is almost divided into six parts. This is divided into almost six parts. We have first heap, then we have stack. ये memory का नाम है. What is this? This is nothing but a name of the memory. Stack. के बाद we have class और method memory area. ये method memory area बोलते हैं. So what are these are the different compartment. So memory is divided into multiple compartments और हर एक compartment को उन्होंने नाम दिया. Now simple example you can think of. So why do we have these compartments? ये सारे compartments पूरे एक single block क्यों नहीं? For easy organization. So we have this entire compartments. We have classroom, that room, reception. Why do we have? So we have these different compartments for easy organization. So similarly, JVM is also JVM is also dividing the memory into different compartments for easy organization to easily store the data. So these are the first. What is the first component? Heap, stack, and then class or method memory. Yeah, method memory area. Then we have three other components. So this is called as native method memory area. What is the method name? What is the memory area? Native method memory area. Then we have native method stack memory. Then we have lastly PC register or PC register. Think of this. So your memory is divided into multiple compartments. So what is the use of memory usually? Why do we use memory? What is the use of memory? To store data. To store some data. तो अभी आपने इतने सारे variables create, you have created so many variables, main method create किया था, और भी बहुत सारे loops में variables create किए थे, loop चला रहते हैं. ये कहाँ पे store होता होगा? तो this must be stored somewhere. कहीं ना कहीं तो store होता होगा. आपने इतने सारे variables create करे थे, right? So whatever the variables we have created so far, they are of category called as local variable. उनको हमने method के अंदर create. तो अभी तक हमने जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए उन्हें बोला जाता है लोकल वेरिएबल. मतलब अपने कहाँ पर क्रिएट करे थे? सारे मेथड के अंदर. मतलब मेन मेथड के अंदर ही लिखा था सारा कोड हमने. अभी तक मेन मेथड के बाहर कहीं कोड लिखा है कि हमने? तो उन वेरिएबल्स को बोला जाता है लोकल वेरिएबल. तो ये वेरिएबल्स का डेटा कहाँ पर स्टोर होता होगा? कौन सी तो मेमोरी में स्टोर होता होगा. व्हाट इज द मेमोरी? तो स्टैक इज द मेमोरी एरिया वेयर योर लोकल वेरिएबल्स आर स्टोर. यहाँ पर आपके लोकल वेरिएबल क्या स्टोर है? यहाँ पर लोकल वेरिएबल. your local variables are stored inside the. अभी आपके पास और दो कैटेगरी के वेरिएबल्स है, जैसे आपका इंस्टेंस वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स. these will stored inside the heap memory. इंस्टेंस वेरिएबल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं? heap memory area. और क्लास और मेथड एरिया में एक और कैटेगरी के आपके पास वेरिएबल्स है. क्या नाम है उनका? स्टैटिक. परफेक्ट. so we have स्टैटिक वेरिएबल. क्या नाम है उनका? स्टैटिक. ये तो हाई लेवल डेटा की बात हो रही है. और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो जावा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? तो जावा के ऑब्जेक्ट्स दे आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम. तो जावा के जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ डेटा बोल सकते. दिस ऑब्जेक्ट्स आर stored inside which memory area? heap memory area. heap memory. अभी आपके एप्लीकेशन में बहुत सारी मेथड्स होगी, बहुत सारी मेथड्स होगी. यू विल हैव मल्टीपल मेथड, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मेथड. तो कौन सी मेथड अभी करंटली एग्जीक्यूटिंग है? कितनी सारी मेथड्स कंप्लीट हो गई?
कंट्रोल कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये सारा डिटेल्स आपका कहाँ पर रहेगा, स्टैक। तो इसे यहाँ पर हम बोलते हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया व्हाट इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड दिस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया, मेथड एग्जीक्यूशन स्टैक, इसे मेथड एग्जीक्यूशन भी बोला जाता है। जावा के मेथड्स आप बोलते हो राइट, मेन मेथड या और भी कोई, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हो रही है, कौन से मेथड ने कौन सी मेथड को कॉल किया, सो एवरीथिंग इज ट्रैक इनसाइड दिस पर्टिकुलर स्टैक। देन क्लास और मेथड एरिया, तो जो भी आपने क्लास बनाया था, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था, उसका एक स्ट्रक्चर लिखा था आपने पूरा, वो स्ट्रक्चर कहाँ पर स्टोर होता है, दिस इज द एरिया, इन दिस पर्टिकुलर मेमोरी एरिया स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, क्या स्टोर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास, जो आपका स्ट्रक्चर लिखा था, क्लास लिखा था, वो कहाँ पर स्टोर होता है, क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। क्लियर है तीनों कंपार्टमेंट्स। ये सारी चीजें, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ये सारे चीजें हम पढ़ने वाले, दैट इज द नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव, क्लास कंपोनेंट। हम डिटेल में सारे वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक्स, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले, राइट। नाउ नेटिव मेथड स्टैक एंड पीसी रजिस्टर। अभी जावा के अंदर खुद जेडी के बहुत सारा नॉन जावा कोड भी है, जावा के अंदर बहुत सारा नॉन जावा कोड, मतलब विच इज नॉट रिटन इन द जावा। नेटिव का मतलब क्या होता है, द कोड विच इज नॉट रिटन इन द, यस, नेटिव का मतलब होता है नॉन जावा मेथड। नेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन जावा, तो उनको एग्जीक्यूशन के लिए नेटिव मेथड मतलब होता है नॉन जावा मेथड्स, जो नॉन जावा का कोड है उसको एग्जीक्यूशन के लिए कहीं ना कहीं तो उसके भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे सी का कोड हो सकता है, सी प्लस प्लस इंटरनली जावा यूज करता होगा, तो उन कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं तो मेमोरी चाहिए होगी, देयर मस्ट बी सम मेमोरी रिक्वायर्ड, सो वेयर दैट मेमोरी इज स्टोर्ड, so where that data is stored inside the native method memory। जैसे जावा की मेथड थी, कौन सी मेथड एग्जीक्यूट हो रही है उसका ट्रैकिंग के लिए आपने कौन सा यूज किया था, ये वाला जावा स्टैक। तो वैसे ही नॉन जावा मेथड्स का ट्रैकिंग के लिए कौन सा मेथड करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका ट्रैकिंग के लिए जो भी डिटेल्स रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, नेटिव मेथड, राइट। देन लास्टली वी हैव पीसी रजिस्टर। पीसी रजिस्टर क्या करता है, पीसी रजिस्टर will store what is the next instruction to be executed, मतलब नेक्स्ट कौन सा लाइन एग्जीक्यूट करना है उसका डिटेल्स यहाँ पर रहेगा, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट क्या एग्जीक्यूट करना है उसका डिटेल्स कहाँ पर रहेगा, दिस विल बी स्टोर्ड इनसाइड द पीसी, विल बी स्टोर्ड इनसाइड द, ठीक। नाउ ये नेटिव मेथड्स कौन लेके आएगा, वहाँ कहाँ से लेके आएंगे सारे मेथड, कौन लोड करता है, जावा का तो आपने देखा कि जावा का क्लास लोडर है, बाइट कोड वेरीफायर है, ये जावा का कोड यहाँ पर लेके आ रहा है। तो वैसे ही नेटिव मेथड स्टैक, इनमें डेटा कहाँ से आएगा, तो दिस विल बी फ्रॉम दी, कॉल इट एज अ प्रोग्राम कॉल्ड एज program called as, so this is called as native इंटर, क्या बोला जाता है इसे, नेटिव, we call it as native interface। so this interface, this is kind of a program, this is kind of just like class loader हमने वहां से लो किया आए थे, तो वैसे native interface is a kind of a program, so which is going to get the code from folder native library। Native library is the location where, native library, this is the location where non Java code will be, the location where non Java code will be stored। Now this particular thing is the interface going to connect between native library
and this, right? So native library जहाँ पे non java code होगा, that code will be picked up by the native interface, and that will be loaded inside this particular, right? And finally, if everything is stored, now what is the next thing? सारा डेटा स्टोर किया आपने यूजिंग की वेरिएबल्स, आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया। फाइनली क्या होता है, आपके इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करना है, आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है डेटा स्टोर करने के बाद। देन फॉर दैट फाइनली वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एज execution engine. What is the name? Execution engine. So this is the program which is going to, this particular program is going to generate the zeros and the part of also G that will be run on your operating. See the big picture now. First, you write the Java program, you compile that with the help of Java compiler. Then once you compile that, it will generate the .class file, that is bytecode. So this is part is done. This is part is done now. Now we are moving to which part of JRE? JRE in short JVM. JRE के अंदर क्या है? JVM. तो एग्जीक्यूशन, अभी ये पहला पार्ट हो गया, दिस इज स्टेज 1। ये क्या था? पहला आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो 1 आपका कंपाइलेशन हो गया एंड सेकेंड स्टेप्स में आप यहाँ पर आते हो। Now, what are the dot class we have? That will be loaded by the class loader. It is loaded by the class loader in the memory. Then inside that, uh, we have another program called as bytecode verifier. It is also a program. It is also a program. So what is the job of this particular thing? See this. What is a part of this particular thing? Bytecode verifier. It is going to verify the bytecode. It is going to verify the bytecode which was loaded in the memory. Once that is verified, everything is correct, then the bytecode content will be loaded into different memory compartments. Now the first part, what is that? Heap में क्या स्टोर होगा? आपका instance variables and object. Then we have the second part. What is that? Stack memory area. इसमें क्या रहेगा? आपका local variables and method execution का details. Third, यहाँ पर कौन से वेरिएबल्स रहेंगे? स्टैटिक वेरिएबल्स। मेथड, इस मेमोरी एरिया का नाम है क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। तो फर्स्ट वन इज हीप, स्टैक, क्लास और मेथड मेमोरी एरिया। यहाँ पर आपके स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे और क्लास का स्ट्रक्चर रहेगा। देन वी हैव द फोर्थ, नेटिव मेथड। जो नेटिव मतलब नॉन जावा कोड एग्जीक्यूशन के लिए जो भी मेमोरी चाहिए होगी वो कहाँ पर मिलेगी आपको? नेटिव मेथड। और करंटली कौन सी नॉन जावा मेथड एग्जीक्यूशन में चल रही है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको डिटेल्स? नेटिव मेथड स्टैक में। मतलब नॉन जावा का कोड मतलब C++ के वेरिएबल्स वगैरह वो कहाँ पर स्टोर होंगे? दिस इज द पर्टिकुलर मेमोरी एरिया। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, उसका डिटेल्स कहाँ पर रहेगा? पीस प्रोग्राम काउंटर बोला जाता है। और ये जो नॉन जावा मेथड्स होती है, नेटिव मेथड्स, ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी? फिजिकल लोकेशन का नेटिव लाइब्रेरी। और यहाँ से कोड लेके आने का काम किसका है? नेटिव इंटरफेस। नो, नेटिव इंटरफेस विल इंटरफेस, it is kind of a intermediate or a kind of a broker which will work between these two guys, native method and, तो यहाँ से मेथड लेके आना, यहाँ पर डेटा पुट करना, ये सारा काम किसका है? नेटिव इंटरफेस। Now once everything Java, non-Java code and compartment, everything is loaded into the memory, what is the next thing? You have the execution engine. Job of this execution engine is to generate zeros and ones and execute the program. Right? So this is your high level JVM picture. Clear? Will you able to explain that? So just someone tell me how things are flowing.
हाँ, डॉट क्लास है राइट, डॉट क्लास है ना। आप जावा सी फाइल का नाम लिखते हो, फिर उसके बाद जावा और क्लास का नाम लिखते हो। क्या लिखते हो आप? जावा और क्लास का नाम। कमांड क्या था आपका कंपाइलेशन के लिए? जावा सी और फाइल का नेम। और एग्जीक्यूशन क्या कमांड था आपका? जावा और क्लास नेम। तो वहां से आपका सेकेंड पार्ट चालू हुआ। फर्स्ट पार्ट इज कंपाइलेशन, सेकेंड पार्ट इज एग्जीक्यूशन। तो जावा और आपने क्लास का नाम लिखा था कमांड में, जावा और क्लास नेम। तो क्लास नेम वो क्या होगा? फर्स्ट विल बी लोडेड इन द मेमोरी बाय class loader. So class loader is the program which is going to load the class in the memory. Then after that, what is the next program? Bytecode verifier. So which will verify the whatever the bytecode is there in that particular class. So it will verify. After that, it will load that particular components of that particular class into different memory area. Execution memory. That is execution. So what are the memory areas we have? Heap, stack, class or method memory area, native method area, then native method stack memory area, and PC register. So what is there inside the heap? What do we store inside the heap? Objects and instance variables. What do we store inside the stack? Method area, stack memory area. So we have local variables and method execution stack. कौन सा execution method में कौन सा चल रहा है? That is the point. Then we have next class और method memory. What is the memory area name? Class और method memory area. उसके अंदर क्या रहेगा आपका? Static variables and class का structure. उसमें क्या रहेगा आपका? class का structure. Then we have next native method memory area, जहाँ पर आपका नॉन जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ पर memory. और नॉन जावा कौन सी मेथड एग्जीक्यूट का मेंटेनेंस के लिए कहाँ पर रहेगा आपका? नेटिव मेथड स्टैक मेमोरी. और लास्ट में आपका पीसी रजिस्टर में व्हाट इज द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, दैट डिटेल्स यू विल फाइंड इनसाइड द पीसी रजिस्टर. बट वेर यू विल फाइंड इनसाइड द पीसी रजिस्टर. देन नेटिव मेथड्स को प्रोग्राम में मतलब मेमोरी में लेके आने, नेटिव मेथड्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नेटिव लाइब्रेरी. इट इज काइंड ऑफ लोकेशन बोल सकते हो. वहां से फाइल या जो भी कोड लेके आने किसका काम होता है? नेटिव इंटरफेस. Now that native interface will load the native code components into the native method memory. And once everything Java, non-Java code components or everything is loaded into the memory, then comes a execution. The execution engine will generate the zeros and ones, and that's how program will be executed. That's how program will be. clear है पूरा स्ट्रक्चर? याद रहेगा. यहाँ पर तीन चीजें आपको बहुत फोकस करनी है. कौन कौन सी चीजें? हीप, स्टैक, क्लास. कौन कौन से मेमोरी एरिया से सबसे ज्यादा यही आप मेरे मुंह से सुनोगे? हीप, स्टैक, क्लास और मेथड मेमोरी. हीप मेमोरी एरिया, स्टैक मेमोरी एरिया, क्लास और मेथड मेमोरी. दीज आर द नेम्स ऑफ द मेमोरी, different memory component. ठीक. And one more interview question you might ask. So what are the, we have different classes, right? We have different set of classes which are predefined classes. You will define some classes. There might be some other classes will be. So to load different types of classes, we have different types of class loader. One of the interview question. Just remember. So we have different types of class loader based on your. तो अगर आप कोई जो rt.jar होता है, मतलब जो प्रीडिफाइंड क्लासेस होता है जावा का जेडी के साथ, उनको लोड करने के लिए आपके पास होता है सिस्टम क्लास लोडर. देन वी हैव एप्लीकेशन क्लास लोडर. देयर सम जो डिफाइंड क्लासेस, उनको लोड करने के लिए एप्लीकेशन क्लास लोडर का हाँ. बूटस्ट्रैप क्लास लोडर. ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आपको बस नेम पता हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास लोडर. And these different class loaders will load different types of classes, defined classes या यूज और सपोर्टिंग क्लासेस. तो अभी आप बस ये भी याद रहे कि क्लास लोडर प्रोग्राम कुछ होता है, दैट इज आल्सो मोर देन सफिशिएंट. इसमें देखने के लिए बहुत सारी चीजें, मैंने बस हाई लेवल आपको स्ट्रक्चर. एवरी कंपोनेंट इटसेल्फ इज अ डिफरेंट आर्किटेक्चर. विल नॉट गो दैट डीप, दैट इज नॉट नेसेसरी राइट अवे.
You have these different types of class load. Class loader program is responsible to load the class in the memory. Then bytecode program is the bytecode. Then that bytecode, once it is verified, it will load the different components, different tick. Here, Sarah. Okay, about 20 more minutes. Any queries on this? So next, going forward, next 2 to 3 weeks हम क्या देखने वाले, that I am just going down. Almost 3 weeks लगेंगे हमें इसे कंप्लीट करने के लिए, इंटायर थिंग. मे बी 2 वीक में भी, मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो जल्दी भी हो सकता है, बट 2 to 3 weeks इट विल टेक. मतलब ऑलमोस्ट 10 सेशंस, 10 to 12 सेशंस यहाँ पर हम सीखने वाले हैं. मैंने लास्ट टाइम आपको, आई थिंक आपको बताया था व्हाट ऑल थिंग्स. यहाँ पर आप सीखोगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट. सो दिस मे बी इट विल टेक सम टाइम. क्लास एंड ऑब्जेक्ट पूरा एकदम थियोरेटिकली नहीं सीख. यू डू नॉट नीड टू लर्न दिस थियोरेटिकली. वी विल टेक दिस इन प्रैक्टिस. रियल टाइम के साथ हम इसे यूज करें. क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये डिस्कशन होगा. उसके बाद आपका आएगा क्लास कंपोनेंट. मतलब एक क्लास के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आप हाई लेवल 5 चीजें डिस्कस करोगे. तो 5 थिंग्स: वेरिएबल्स, मेथड्स, बाद कंस्ट्रक्टर, के बाद आपका ब्लॉक्स, क्लास. Again in variables we are going to learn 3 things: in local variables, instance variables and static. बहुत ज़्यादा कंटेंट. उसके बाद मेथड्स हम पढ़ेंगे. मेथड्स आपके पास है इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक, इंस्टेंस मेथड एज वेल एज स्टैटिक. एंड और ये सब कुछ समथिंग, इट इज़ नॉट समथिंग ऑप्शनल, आपको ये सब कुछ आना चाहिए. देन वी हैव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ 3 टाइप्स. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दैट आल्सो वी विल लॉक. देन वी विल हैव जीरो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें. और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे नाम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि हम यही. देन ब्लॉक्स आपके पास, अगेन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स, इंस्टेंस ब्लॉक एंड स्टैटिक ब्लॉक. एंड नेस्टेड क्लासेस, अगेन वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है. यहाँ पर स्टैटिक नेस्टेड क्लास, देन इनर क्लास, लोकल इनर क्लास. के बाद पढ़ेंगे एनोनिमस क्लास क्या होता है. और उसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड क्लास कम, जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम इसी करती हूँ. और इसमें जितना टाइम ज़्यादा लगता है दैट्स परफेक्टली फाइन. एक हफ्ता या ज़्यादा हफ्ता भी है तो दैट्स परफेक्टली फाइन. उसके बाद आता है आपका oops, इज द मेक और ब्रेक काइंड ऑफ थिंग. अगर आपको ये क्लास कंपोनेंट्स नहीं आता है तो देन यू हैव टू स्टॉप देयर इटसेल्फ. यू कैन नॉट कंटिन्यू. यू हैव टू स्टॉप देयर इटसेल्फ. लर्न दिस
concepts and then start with the rest of the course. This is your make or break thing. You do not know these things, there is no point in going further of the course. You will not understand. थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है लेकिन full will not understand. So this is the thing. Then inside the oops, we are going to learn access specific. क्या सीखेंगे हम? Access specify. तब आपका पब्लिक प्राइवेट ये सब यहाँ पर कवर होगा. प्राइवेट. Then we have second concept called as encapsulation. Encapsulation कैसे करते हैं, क्या होता है, ये सब यहाँ पर डिस्कस. Then we have inheritance. Inheritance oops में सबसे बड़ा मतलब आपका टॉपिक हो सकता है. यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीख. What is this? के टाइप्स कैसे यूज करना है, सबसे बड़ा उसको 2 से 3 सेशन या 4 सेशन. देन सुपर कीवर्ड, मल्टी लेवल, बहुत सारे यहाँ पर सिनेरियोज यहाँ पर कवर कर. देन वी हैव पॉलीमॉर्फ, आपका मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सब कुछ आपका यहाँ पर कवर. ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कवर्ड. Then finally we have abstraction. Abstraction is also very big topic. There we have to understand two things: abstract class and interface. Class and interface. ये होने के बाद आप सीखोगे जावा 8 फीचर. हो गया जावा 8 फीचर. उसका ही पार्ट में आता है. यहाँ आप फंक्शनल इंटरफेस पढ़ोगे, डिफॉल्ट मेथड्स क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स क्या होता है, लैम्बडा एक सारी कंसेप्ट आप पढ़ोगे. ठीक. इसके बाद आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट क्लास. ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, बहुत सारी देयर आर एन नंबर ऑफ अदर माइन्यूट, छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें हैं, वो सारे. अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सही से पढ़ना है तो कंपोनेंट. दिस इज द थिंग वी हैव. ये सब कुछ आपको आना पड़ेगा. दिस इज नॉन निगोशिएबल, मतलब आप इसे स्किप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट स्किप दिस. ठीक है. लेट्स गिव मी सम इंट्रोडक्शन अबाउट योर क्लास एंड ऑब्जेक्ट. लेट्स गिव मी सम आइडिया अबाउट क्लास. just introduction part I am covering. There are a lot many things we have discussed, but मैं आज आपको बस थोड़ा एक hint दे देता हूँ कि what class and object. So before we talk about class and object, we will take some examples, real world examples, not real time, real world examples. Then you will try to analyze or create an analogy of class. सबसे पहला क्वेश्चन, घर बनाने से पहले आपको क्या करते हो आप लोग? If you want to construct a house, you will create a plan. You will have a plan. There you will write the instructions कि आपका घर कैसा हो. Everything you will write there itself. Then you will have the actual house. This is the plan. क्या बन गया? We'll have this plan, and using this plan you are going to house. So how many houses you can construct using this particular plan? Is there any limitation? No, right? So you can construct any number of houses. जब आप मतलब प्लान बनाते हो, मतलब किस चीज़ का प्लान बनाते हो? तो you had empty space, आपके पास खाली स्पेस था, राइट? उस खाली स्पेस को आप कैसे ऑक्यूपाई करोगे, इस चीज़ का प्लान बनाया था. क्या था प्लान आपने? व्हाट वाज देयर अर्लियर, कुछ खाली प्लॉट हो सकता है, उस प्लॉट को आपने ऑक्यूपाई करने के लिए प्लान बनाया था. आपने क्या किया था? ऑक्यूपाई, मतलब आपने वहां पर जो भी जगह थी, स्पेस था, उसे रिजर्व कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया. तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्लान यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स. कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स. पहले क्या बनेगा? प्लान बनेगा या बिल्डिंग बनेगा? पहले प्लान बनेगा, राइट? देन यूजिंग दैट प्लान यू विल क्रिएट द. तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो. तो क्लास इज समथिंग
your plan, and your building is nothing but a object. Building is nothing but a object. So class is kind of a set of instructions, a plan to create object. To create object. So what is class? Class is nothing but a some set of instructions, set of guidelines, or set of rules, or a template, or a blueprint, और कुछ गाइडलाइंस बोल सकते इस चीज़ के लिए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब मेमोरी स्पेस एलोकेट करना. क्या करना? मेमोरी स्पेस एलोकेट. तो बिल्डिंग क्रिएट करते मतलब आप क्या करते हो? यू आर क्रिएटिंग अ बिल्डिंग मतलब आपने जो खाली जगह थी उसको ऑक्यूपाई कर दिया. बिल्डिंग क्रिएट करना मतलब ऑक्यूपाइंग द मेमोरी स्पेस. बिल्डिंग क्रिएट करना मतलब ऑक्यूपाइंग द स्पेस, द एम्प्टी स्पेस इट वाज देयर, so you try to occupy that. मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मतलब whenever you say that you are creating an object, it means that you have occupied the space. किस चीज के लिए मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करोगे आप? जो भी प्लान में दिया होगा. so whatever it is specified in the plan, for that things you will allocate the. बिल्डिंग क्रिएट करते हो मतलब आपने जो प्लान में लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर फ्लोर पे इतने सारे फ्लैट्स होंगे, इस पर्टिकुलर फ्लैट में ये सारा चीज़ें रहेंगी, तो आपने क्या कर दिया? आपने जो प्लान में दिया था उसके अकॉर्डिंग आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया और स्पेस एलोकेट कर दिया. तो विच वन इज फिजिकल एंटिटी? फिजिकल which occupies the space. Which one is physical entity into this? Object. The object is an physical entity which occupies the space. What is logical entity? Class. Class is a logical entity. So class is just on piece of paper. और आपका object बोल सकते हो, it is kind of a actual building itself. Actual building itself. Right? This is the first analogy I wanted to tell you. Now, what do we need first? Class first or object first? We need class first. Then using that class, we will create the object. What is the need of class? To create object. Create object. So without class, can you create objects? So without class, we cannot create the object. So in order to create the object, what is the prerequisite? You must have a class. In order to create an object, what is the prerequisite? You must have a class. Must have a class. Without that, you will not be able to create a object. So using one class, how many objects you can create? Many. तो जितने बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आप मेमोरी एलोकेट करोगे या नहीं करोगे? जितने बार भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू क्रिएट, मतलब allocate the memory space. Yes, right? So every time you create an object, you are allocating the memory space. और किसे मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हो आप? विच इज स्पेसिफाइड इन द क्लास. मेमोरी स्पेस एलोकेट करते हो विच इज स्पेसिफाइड इन द क्लास. Right? This is the first analogy. There are a lot of, we will discuss close to 4 to 5 analogies, and then we will try to take it further. So class, so what is this? Why do we need? तो यहाँ पर आपको simple questions ready करना है. What questions? What it is? Why do we need? How to use that? When to use that? So these questions ask. What is a class? Why do we need a class? How to create class? How to use that? When to use class? Similarly, what is object? Why do we need object? How to create object? When to? These details